Good day, everyone. Welcome to the NTV, and you are watching NTV News, your source for exclusive news and entertainment. This is Bikash, bringing you today's top stories from India and around the world. And the time is exactly 9:30. At least 82 people have died and several others are feared trapped underground following a coal mine explosion in China's Shaanxi province, state media reported Saturday. The blast occurred at 7:29 p.m. local time on Friday at the Liushenyu coal mine operated by the Tongzhou Group. Reports indicate that 247 workers were on duty at the time of the incident. Rescue operations are currently underway at the site. State news agency Xinhua reports that the cause of the explosion remains under investigation as search efforts continue. In a major boost to employment, Prime Minister Narendra Modi has virtually distributed more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth during the 19th Rozgar Mela. Organized under the Union government's Employment Creation Mission, this initiative aims to secure jobs for youth across various government departments. According to reports, about 1.2 million youth have already received employment through the 18 Rozgar Melas held so far, significantly strengthening job opportunities across the country. Addressing the event, Prime Minister Modi stated that the global community is highly enthusiastic about the progress of India's youth and technology. He added that the world is eager to be a part of India's development journey and encouraged the nation's youth to build a unique identity for themselves globally. साथियों, आप सबको पता है, अभी 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी-बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नेदरलैंड की मैं बात करूं तो नेदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल, समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं।
क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है। India has successfully conducted a flight trial of an advanced Agni missile equipped with multiple independently targeted re-entry vehicle or MIRV technology. The test was carried out on May 8 this year from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha, under the direction of the Strategic Forces Command. During the trial, the missile carried multiple payloads aimed at different targets spread across a wide area in the Indian Ocean region. A network of ground and ship-based stations monitored the entire flight path, tracking the missile from liftoff until all payloads hit their targets. According to the Defense Ministry, the test successfully met all mission objectives, validating all operational and technical parameters. Let's take a break. We will be back soon. নমস্কার, আপন কোন মিডিয়া ও এন্টারটেইনমেন্ট জগত প্রতি প্যাশনেট? ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରେ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର, କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କଥା କହିବାର କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଏନ୍ଟିଭି ନିଷ୍କର୍ଷା ବିଷୟରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖ ପହଞ୍ଚୁଅଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି କଟକ, ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଟିମ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏବେ 5ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଖୋଜୁଛୁ। ପ୍ରଥମ, ଭିଡିଓ ଏଡିଟର। ପ୍ରିମିୟର ପ୍ରୋ ବା ଆଫ୍ଟର ଏଫେକ୍ଟସ୍ ଜାଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର। ଭିଜୁଆଲ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଜାଣୁଥିବା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ତୃତୀୟ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମ୍ୟାନେଜର। ଡିଜିଟାଲ ଅଡିଏନ୍ସ ବୁଝୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗ୍ରୋ କରିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ, କପି ଏଡିଟର କମ୍ ଆଙ୍କର, ଯିଏ ଲେଖା ବି ଜାଣନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବି କନଫିଡେଣ୍ଟ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଓ ଆଙ୍କର। ନିଜ ଆଇଡିଆ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରି ଅନ୍ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫ୍ରେଶର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍, ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ରୋଲ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟର ପ୍ରୋ ବା ଆଫ୍ଟର ଏଫେକ୍ଟସର ନଲେଜ ଦରକାର। ଅନ୍ କ୍ୟାମେରା ରୋଲ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କାମ କରିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏକ ବଡ଼ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ। ଭାଷା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମ୍ରେ 2ଟି ଭାଷା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଭାଷା ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମିଳିବ। ଆବେଦନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ଆପଣଙ୍କ ରେଜ୍ୟୁମ୍, ଶୋରିଲ୍ ବା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପଠାନ୍ତୁ ଆମ ଇମେଲରେ nishkarsha.editor@gmail.com ଅଥବା ସିଧାସଳଖ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ 9937619039 বা 7894855662। एनटीवी निष्कर्षा केवल एक चैनल नुहे, यह एक प्लाटफॉर्म जेउठी आपणको टैलेंट को सठिक सुजोग मिलिबो। आसंतु आम टीम्र एक गुरुत्वपूर्ण अंश हुअंतु। आमे आपणके आपणको सह कथा हेबाकु अपेक्षारत। धन्यवाद। Fuel prices in India have gone up yet again, marking the third hike in just 10 days. In the latest revision, petrol prices have been increased by 87 paise per litre, while diesel has risen by 91 paise. This is the third price hike since May 15th, bringing the cumulative increase to about 5 rupees per litre. State-owned oil companies are gradually passing on the impact of rising international oil prices to consumers. Previously, fuel prices were increased by 3 rupees per litre on May 15th, followed by a 90 paise hike on May 19th. The ongoing price surge is linked to escalating tensions in the Middle East. The lack of a peace agreement between the United States and Iran has raised fears of another war. Furthermore, a blockade at the critical Strait of Hormuz has disrupted supply lines, preventing India from importing sufficient quantities of crude oil. आज पेट्रोल रे 92 पैसा, डीजेल रे 97 पैसा दर वृद्धि होईची भुवनेश्वर रे। एवं जदि देखिबा 15 तारिख ठू आज भितरे ये तृतीय थर दर वृद्धि होईची, जोटा कि पेट्रोल रे 5 टंका 7 पैसा एवं डीजेल रे 5 टंका 12 पैसा
भुवनेश्वर प्राइस अनुसार आ दर वृद्धि कारण तो बहुत स्पष्ट जे मध्यप्राच्य युद्ध जेबेठू आरंभ है अशोधित तैल दर आम देखिले जे $70 रु बढ़िकी $150 पर्यंत जाई आज 113-114 रे रही। तो भारत किणुवा तेल जोटा कि मध्यप्राच्य अधिका किरी किणुला सेटा बहु मात्रा रे इम्पैक्टेड है। भारत को अन्य देश ठू तेल किणवा को पड़ुछि। रशिया, वेनेजुएला, अमेरिका, साउथ अफ्रिका एभली देश गुड़ाकू तेल किणा पड़ुछि एवं तेल परिवहन महंगा हो जाइछि। जो बाटरे आम 7 दिन रे तेल पाउतले मध्यप्राच्य बाटरे एबे आमको साउथ अफ्रिका देकी केप ऑफ गुड होप देकी आनिया को पड़ुछि जोटा कि आउरी अधिका 15 दिन लगुछि। युद्ध परिस्थिति जोगु इंश्योरेंस रो दाम तेल परिवहन रे बहु मात्रा रे बढ़ी जाइछि। सो तैल कंपनी को देखा गले 30 टंका प्रति लिटर पेट्रोल 75 रु 80 टंका प्रति लिटर डीजेल रे हानि सहिबा को पड़ुथिला एवं किछि आंकलन अनुसार ऑलरेडी ए 3टा राष्ट्रायत्त तैल कंपनी माने हाराहारी 50,000 कोटी टंका एई युद्ध आरंभ होगा दिन ठू आज पर्यंत हरई सारी दर वृद्धि न करिकी। ता सत्ते केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क 10 टंका प्रति लिटर ह्रास करथिले हेले मध्य तैल कंपनी अहेतुक हानि जेतबेले हेइची यार विकल्प दर वृद्धि ही थिला किंतु केंद्र सरकार चाहू नथिले दर वृद्धि करबा पई कारण इन्फ्लेशन बढ़िले सबु जिनसर दाम बढ़ी थांता। डीजेल रो दाम जेतु गोटे परिवहन फ्यूएल एटा डीजेल रो दाम वृद्धि हवा माने सबु जिनसर दर दाम वृद्धि हवा सेतिपई आज पर्यंत आम 15 तारिख पर्यंत देखिले जे तैल कंपनी बा केंद्र सरकार एटा को सही आसिले किंतु एई भली लंबा समय पर्यंत सही पारिबा हानिटा को कोनोसी कंपनी बा कोनोसी सरकार संभव नुह। सेतिपई जेतबेले भाबिले जे आउ समय अपेक्षा करि परिबेनी भाबुतले केंद्र सरकार बधे जे मध्यप्राच्य युद्ध किछि मात्रा रे कोहळ हेकि हरमुज प्रणाली खोली जिवो सेतिपई दर वृद्धि करिबा नाही किंतु जेतेबेले सेथरे विलंब हैला एवं अमेरिका आउ ईरान मध्य रे युद्ध विराम हैला सत्ते कोनोसी निष्कर्ष रे आसिकी युद्ध पहुंची पारु नाही हरमुज प्रणाली संपूर्ण भावे फिटी पारु नाही सेतिपई बाध्य होइकिरी बधे सरकार आउ तैल कंपनी माने ए दर वृद्धिर निष्पत्ति नैथिबे। देखंतु एटा बहुत सिंपल मैथमेटिक्स जदि तैल कंपनी एते हानि सही सारलानी केंद्र सरकार पाखापाखि 15,000 कोटी टंका मासुकु हरौचंती जेबेठू उत्पाद शुल्क कमैचंती तो केंद्र सरकार हानि होउची ऑयल कंपनी हानि होउची एवं दर अंतरराष्ट्रीय बाजार रे कमु नाही तो आ युद्ध बंद हो नाही तार अर्थ ही गोटिए जे तैल कंपनी अहेतुक हानि को कम करबा पई कारण तैल कंपनी को भी जदि तेल किणिकी आनिकी आमको जोगाण करिवार अछि ताले तांका पाखरे पैसा थिबा दरकार। एभली बड़ अमाउंट जदि से प्रतिदिन 1000 कोटी टंकार जहाँ आंकलन करा जायछि तैल कंपनी हानि होउछि जदि एभली हानि से सही चलिए गोटे दिन आसो जो दिन से तेल किणी पारिबे नाही एवं सेतबेलକୁ आमे कहिबा जे जेते टंका पछे नियो किंतु तेल आमको दियो से परिस्थिति न आसू बरन दर वृद्धि अल्प समय पाई हो कारण ये युद्ध सबुदिन चलिबो नाही आउ किछि समय बा किछि मासरे आर निश्चित निष्कर्ष बाहरिबो कारण अमेरिका और ईरान उभय एथरु बाहरिबाकू चाहुचंती किंतु सम्मानजनक गोटे स्थिति न आसीबा पर्यंत उभय निज जिद रे अटक रहिचंती। सो एटा को आम आशा करिबा जे ये अल्प दिन भितरे मासे हो कि 2 मास हो ये युद्ध सरिबो सेतिपई दर वृद्धि मध्य हेले किछि दिन पई बा किछि मास पई आमको सहिबाकू पड़िबो पर मुहूर्त में जिते अशोधित तैल दर कोहल हो मध्यप्राच्य तेल आउ थे भारत को आसवा आरंभ हो कंपनी माने आउ थे तेलर दर कमेवाई बाध्य हे। भारत सरकार पाखे एवं ओडिशा रे मध्य जदि कहवा सफिशिएंट तेल गच्छित रही आमर जहाँ दैनंदिन दरकार युद्ध पूर्व जो भली गच्छित रोला से भली स्थिति रे रही आम जदि युद्ध समय आमर गच्छित तेल आम व्यवहार कर चली थांते आमको तेल मिलू न था ताहले चिंतार विषय था किंतु आम जेतिकी व्यवहार करुचे सेतिकी आम पाखु दैनंदिन बा सप्ताह हिसाब से आउ थे आम पाखु पलि आसुची एवं आमर 13 दिन रु 15 दिन जो स्टॉक रहे ओडिशा रे से सबु बेले कायम रही 13 दिन रु 15 दिन। सो चिंतार कौनसी विषय नहीं पैनिक है कि किणवार आवश्यकता नहीं दर वृद्धि को आशा करिबा एवं दर वृद्धि हेले मध्य सहिबाकू पड़िबो। Widespread protests have erupted across Odisha as frequent power outages leave residents struggling against intense heat and high humidity.
Local communities are protesting prolonged electricity disruptions, accusing utility providers of failing to respond to their repeated complaints. With temperatures remaining high across the state, many areas are facing power cuts lasting several hours. In protest, citizens have blocked roads and staged demonstrations, some holding hand fans and others wearing saris to highlight their distress. The ongoing crisis has raised serious questions about summer preparedness. Ramesh Satpathy, the president of the Electricity Consumers Association, has questioned whether authorities were adequately prepared to handle the surge in power demand this season. आमे स्पष्टता सह कहिचु कि विद्युत काट न करिबा पई पर जो प्रकार आपनक वर्तमान हिट वेव चली छी सेतिरे सेटा कहार हाथ रे नाही से कारण रो ट्रांसफॉर्मर बर्नआउट हे जाउची ओवरलोडिंग हे जाउची अधिक एसी व्यवहार लोक करूछन जो पाई ओवरलोडिंग रे से समस्या होची पर तथापि ताकू नै करी आमे जति शीघ्र हेई पारुछि ताकू रिस्टोर करिबा पाई ओडिसा रो जनसाधारण को विद्युत स्टेबल विद्युत जोगैबा पाई व्यवस्था करूछु. The inventory process of the Shri Mandir Ratnabandar will be postponed starting tomorrow, with plans to resume the exercise in June. Announcing this decision, Shri Mandir Chief Administrator Arabinda Padhi stated that the postponement has been decided keeping in mind the prevailing extreme heat, the large crowds of devotees, and the upcoming major festivals of Lord Jagannath, including Snana Purnima and the Rath Yatra. To plan the next phase of the inventory, consecutive meetings of the Nijoga and the Temple Management Committee will be held starting next week. Reflecting on the ongoing work, the Chief Administrator described the inventory process as a divine experience. He emphasized that by the grace of Lord Jagannath, the entire exercise is being conducted smoothly and with complete transparency, in strict accordance with the state government's guidelines. He credited this success to the guidance of Gajapati Maharaj, the advice of the high-level and management committees, and the unwavering cooperation of the district administration, security officials, and temple servitors. Meanwhile, today's scheduled inventory work will proceed as planned. Let's take a break. We will be back soon. नमस्कार आपन कोन मीडिया ओ एंटरटेनमेंट जगत प्रति पैशनेट आपन को भितरे जदि कंटेंट क्रिएट करिबारो कैमेरा आगरे कथा कहिबारो किंबा डिजिटल प्लेटफॉर्म रे कामो करिबारो इच्छा अछि ताहेले एही सुजोग आपन को पाई मु कथा हेउची एनटीवी निष्कर्षा विषय रे ओडिसारो एको विश्वस्त मीडिया चैनल जहा यूट्यूब टेलीविजन एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म रे लक्ष लक्ष दर्शकों पाखो पहुंचु अछि आम चैनल रो हेडक्वार्टर अछि कटक ओडिसा रे आउ आमे वर्तमान आम टीम एक्सपैंड करूछु आमे एबे 5टी इंपोर्टेंट पोजिशन पाई कैंडिडेट खोजुछु प्रथम वीडियो एडिटर प्रीमियर प्रो बा आफ्टर इफेक्ट्स जानुथिले आपण आम पाई परफेक्ट द्वितीय ग्राफिक डिजाइनर विजुअल स्टोरी टेलिंग जानुथिबा क्रिएटिव माइंड तृतीय सोशल मीडिया मैनेजर डिजिटल ऑडियंस बुझुथिबा एवं प्लेटफॉर्म ग्रो करि पारुथिबा व्यक्ति चतुर्थ कॉपी एडिटर कम एंकर जी लेखा भी जानती कैमेरा आगरे भी कॉन्फिडेंट एवं पंचम कंटेंट क्रिएटर ओ एंकर निज आइडिया द्वारा कंटेंट तैयारी करी ऑन कैमेरा प्रेजेंट करि पारुथिबा टैलेंटेड व्यक्ति क्वालिफिकेशन विषय रे कहिबाकू गले फ्रेशर हुअंतु बा एक्सपीरियंस्ड आम पाखरे समस्तंको पाई स्थान अछि टेक्निकल रोल्स पाई प्रीमियर प्रो बा आफ्टर इफेक्ट्स रो नॉलेज दरकार ऑन कैमेरा रोल्स पाई कैमेरा आगरे काम करिबार एक्सपीरियंस एक बड़ो एडवांटेज भाषा विषय रे आपणकू ओडिया हिंदी और इंग्लिश मध्यरु अति कमरे 2टी भाषा भल भावरे जानिबा दरकार जेउमाने अधिक भाषा जानती तांकू प्रायोरिटी मिलिबो आवेदन करिबा अत्यंत सहज आपणको रेज्यूम शोरील बा पोर्टफोलियो पठांतु आम ईमेल रे nishkarsha.editor@gmail.com अथवा सीधा सड़क व्हाट्सएप करंतु 9937619039 बा 7894855662 एनटीवी निष्कर्षा केवल एक चैनल नुहे एहा एक प्लेटफॉर्म जेउठी आपणको टैलेंट को सठिक सुजोग मिलिबो आसंतु आम टीम रो एक गुरुत्वपूर्ण अंश हुअंतु आमे आपणके आपणको सह कथा हेबाकू अपेक्षारत धन्यवाद।
Bar Council of India Chairman Manan Kumar Mishra has claimed that nearly 35 to 40% of lawyers practicing in courts across the country may be using fake degrees. In a recent interview with a news agency, Mishra expressed deep concern over the presence of unqualified practitioners in the judicial system. He alleged that many individuals have either purchased fake certificates or obtained their credentials through improper means. To tackle this issue, the Bar Council of India has launched a nationwide verification drive. All practicing advocates are now required to submit their academic degrees and documents for verification. The +2 registration for the 2026 to 27 academic year has been released. Students can submit their applications online starting from the 26th until June 30th. According to the schedule, the first merit list will be published on July 8th. Selected students must complete their enrollment at their respective institutions between July 9th and July 15th. Following this, the second merit list will be released on July 23rd, with the admission process for these students scheduled between July 24th and July 28th. The School and Mass Education Department has confirmed that all phases of the registration process will be completed by August 12th. Veteran actor Anupam Kher has celebrated a major milestone in his theatre journey, receiving back-to-back standing ovations for his play Jaane Pehchane Anjane in New Delhi. The production opened to packed houses at Delhi's Kamani Auditorium. Sharing his gratitude on social media, Kher described the experience of performing 2 shows for 2 entirely different audiences, both of which concluded with unanimous standing ovations. Reflecting on the opening day, the actor said the audience's emotional response made it an unforgettable night. He also confirmed that the play's run in the capital continues through the weekend, with 2 shows scheduled each day. Highlighting the unique power of live theatre, Kher added that there is no greater joy for a creative team than hearing applause echo through the auditorium and feeling a genuine connection with the audience. Odisha continues to reel under sweltering summer heat as a combination of high temperatures and humidity pushes the heat index to worrying levels. Jharsuguda recorded the state's highest temperature. Meteorologists attribute the record-breaking temperatures in western Odisha to hot, dry winds blowing in from central and northwestern India. Meanwhile, easterly winds from the Bay of Bengal are bringing moisture into the coastal areas, leading to high humidity. The regional meteorological department has warned that these conditions are likely to persist today. That's all for now. Stay tuned for more updates.